First of all, let us have a discussion about the learning points about the chapter. To explain you the learning points, I take say certain very simple examples. With that, so you'll be able to have understanding कि हम लोग ये चैप्टर में बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं. ऐसा मान लेते हैं कि आज का डेट है 1 जनवरी और एक इंडियन कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस लिमिटेड. उन्होंने से गुड्स एक्सपोर्ट किया है टू अ यूएस कंपनी. On export of goods on 31st of March, it is going to receive consideration. Let us say that say 31st of March को उनको consideration मिलने वाला है an amount of $1,000. 1st of January को उन्होंने goods export किया, 31st of March को उनको consideration मिलने वाला है of $1,000. At the same time, suppose कि आज का exchange rate 1st of January को exchange rate prevail कर रहा है. टेक्निकली उसको बोला जाता है स्पॉट एक्सचेंज रेट. स्पॉट का मतलब क्या होता है अभी, और स्पॉट एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है कि अभी एक्सचेंज रेट मार्केट में क्या चल रहा है. सपोज अभी का एक्सचेंज रेट चल रहा है लेट अस से 80 रुपीज पर यूएस डॉलर. आज से 3 महीने के बाद रिलायंस कंपनी को एक स्टेट्यूटरी पेमेंट करना है. Let us say an amount of rupees 77,000. आज से 3 महीने के बाद उनको एक पेमेंट करना है से फॉर रुपीज 77,000. आई वॉन्ट यू टू आंसर माई क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स. मेरा क्वेश्चन है सब स्टूडेंट से, कैन रिलायंस कंपनी डिपेंड अपॉन receipt of $1,000 to pay rupees 77,000? Question mark. Please answer in the chat box. I request you to write the reason also, that whatever answer that you give. So friends, we understand that say Reliance company cannot depend upon this receipt for making payment of rupees 77,000. भाई क्यों हम लोग इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं? भाई इसके ऊपर हम लोग इसलिए भरोसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि आज से 3 महीने के बाद एक्सचेंज रेट क्या होगा से वो अनसर्टन है. एक्सचेंज रेट हम लोग कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि 77,000 डिवाइड बाय 1000 यानी 77. तो वो 77 रुपीज पर डॉलर से ज्यादा भी हो सकता है, 77 पर दैट इज रुपीज पर डॉलर से कम भी हो सकता है. सो वी अंडरस्टैंड एट से अगर एक्सचेंज रेट उस दिन 77 रुपीज पर डॉलर से कम हुआ, देन इन दैट केस से $1,000 ऑफ द रिसीप्ट विल नॉट बी सफिशिएंट टू मेक द पेमेंट ऑफ रुपीज 77,000. यानी हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि जब भी आप से गुड्स एक्सपोर्ट करते हो, लिसन केयरफुली, जब भी आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हो और आपको कंसिडरेशन फ्यूचर में मिलने वाला है इन फॉरेन करेंसी, then in that case the amount of that foreign currency in domestic currency is uncertain value. उसको फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कहा जाता है. वी अंडरस्टैंड दैट से 3 महीने के बाद से द एक्सचेंज रेट क्या होगा से फॉर कन्वर्जन ऑफ दिस $1,000 into say rupees, that is into rupees. For that there is an uncertainty, और यही अनसर्टेनिटी को हम लोग बोलते हैं से फॉरेन एक्सचेंज रिस्क. अगर हम लोग कुछ ऐसा सोचते हैं कि सपोज आज का डेट है 1 अप्रैल, there is a company called Tata Motors Limited.
and this company has imported goods. And for import, it is required to make payment on 30th of June. Let us say that it has imported goods, and for that it is required to make the payment of, let us say, pound 1000. ना 30th of June को से पाउंड का एक्सचेंज रेट क्या होगा उसके लिए अनसर्टेनिटी है. So we understand that, say, from Tata Motors Limited point of view, we can say that it is exposed to foreign exchange risk. तो हम लोग ये हमारे चैप्टर जो जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, उसमें हम लोग क्या समझने वाले हैं, उसमें हमको ऐसा समझने वाले हैं that, say, what are the tools which are available in the market for the purpose of mitigating this kind of foreign exchange risk. अगर आप फॉरेन करेंसी में डील कर रहे हो और आपको फ्यूचर में से फॉरेन करेंसी का रिसीप्ट आने वाला है या तो फ्यूचर में आप फॉरेन करेंसी का पेमेंट करने वाले हो, then in that case, say, what kind of risk is there for you, I'm sorry, what are the tools which are available in order to mitigate this kind of risk? That is, for say, the first and the foremost thing that we are going to learn. Next, everybody is requested to listen carefully what I am going to speak. At the same time, we are going to understand that, say, suppose, let us say that, say, there is an Indian company. Indian company is going to, say, undertake a project, let us say, in overseas. It is going to undertake a project, let us say, in Australia. Then in that case, से जो हमारा रूटीन कैपिटल बजटिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है उस हिसाब से we are required to take a decision, let's say, whether we should undertake or whether we should make investment in that project or not. ये तो पहला चीज of course है, पर उसके अलावा friends, what happens at, say, whatever the receipt that, say, they have, that is the Indian company, would be in Australian dollar currency. So apart from the normal capital budgeting principles, say, we are required to incorporate, we are required to take into account, so the exchange rate fluctuations for the purpose of analysis. तो उसको हम लोग कैसे ले सकते हैं वो यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं. We are going to learn that, say, how to incorporate, say, this kind of risk that we have, say, in undertaking a project, say, outside our own country. So we can say a kind of, say, the foreign exchange risk management along with the capital budgeting is something that, say, we are going to understand. I just give you certain examples because there are lot many things that, say, we are going to understand. मैं सब कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको. I give you some like the basic explanation. We are going to have understanding over here. Say something like this. We are going to understand interest rate parity theorem. We are going to understand purchasing power parity theorem. In a way that, say, we are going to understand these theories for the purpose of making an anticipation कि exchange rate future में क्या होगा. यानी अभी let us say रुपीस पर डॉलर का exchange rate चल रहा है 80, तो आज से 3 महीने के बाद exchange rate क्या होगा, 6 महीने के बाद exchange rate क्या होगा, से वो हम लोग यहाँ पे learn करने वाले हैं. By learning the theory, say, which is given a name as interest rate parity theorem and purchasing power parity theorem. And so on, that, so there are a number of things that, say, we are going to understand. I can say something like this. जो tools हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, that includes, you might have heard about forward contract, then futures contract, then option contract, then money market hedge, उसके बाद rupee rollover contract, and so on. So the currency option. We are going to have, so, the learning of all these like fantastic concepts, say, in the chapter of foreign exchange risk management. So write down heading learning points of the chapter.
In that, write down first point. Whenever a company is dealing in export, comma, import, and it is going to receive, comma, pay consideration in future, at that time it is exposed to foreign exchange risk if consideration is in foreign currency. Second point, a company who is exposed to foreign exchange risk can enter in certain transactions to mitigate forex risk, foreign exchange risk, that is forex risk. Full stop. It includes a forward contract, B futures contract, C money market hedge, D option contract, E currency option, I'm sorry, E rupee rollover forward contract, with paragraph write down, and such other transactions.
Full stop. Right on with paragraph. In this chapter, we are going to learn all of them. Third, a company may be undertaking any project overseas. Full stop. In that case, it may need to consider capital budgeting exercise along with forex rates fluctuation. Full stop. Fourth point, in order to forecast exchange rate, we have following theorems. उसमें लिखो ए IRPT ब्रैकेट में लिखो इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम, बी PPPT ब्रैकेट में लिखो परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरम। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा बेसिक लिखा है कि हमको यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, बट दीज आर नॉट द ओनली थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न। उसके अलावा हमको बहुत सारा और चीज भी यहाँ पे पढ़ने का है with respect to the foreign exchange risk management. That includes, say, certain very absolutely new concept that we have, that is considered as the cancellation of the forward contract, then extension of the forward contract, that is say the payment or the receipt of the foreign currency, and so on, the concept that say we are going to learn.